Hello, namaste everyone. Welcome to my YouTube channel, The Local Bloke. In this channel, we will be covering major sports events from around the world. But primarily, we will be focusing on cricket, football, and lawn tennis. So let's get started. So starting with cricket, our Indian team has been announced for the upcoming English tour starting on June 20th, with our first test being played at Leeds. Tough crowd and a tough ground to be honest. So yeah, let's start. Our captain and vice captain are respectively Shubman Gill and Rishabh Pant. Do I agree with Shubman Gill being named as captain? No. Only because of one reason, and that's obvious. Because of his underwhelming average outside Asia. A player of his caliber should easily be averaging around 40, if not more, at least outside Asia. So yeah, that is the only reason that I'm not agreeing with Gill being named as permanent test captain for India, because यार if you see ना, हम लोग को इतनी आदत हो गई कि हमारे जो पुराने टेस्ट कैप्टन्स रहे हैं, दे हैव बीन accomplished टेस्ट बैट्समैन एज वेल. If you look at Virat Kohli, you look at even Rohit Sharma, he was like very decent outside Asia as well, right? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, मतलब देवर बहुत बहुत ज़्यादा accomplished रहे हैं outside Asia. And Shubman Gill hasn't shown that type of consistency that he is capable of. So according to me, Rishabh Pant should have been named as captain and KL Rahul should have been named as vice captain, at least for the next WTC cycle. And if Gill would have improved, then maybe we could have easily changed and appointed Gill as permanent captain then. Bumrah won't be present for the first two tests and will only play three tests. So a lot of permutation and combination needs to be done correctly by Gautam Gambhir and his team in order to get the best out of get the best out of what's left. So my possible 11 would be for the upcoming for the first two tests. Initial two tests would be Yashasvi Jaiswal opening alongside KL Rahul, Abhimanyu Easwaran at number 3, Shubman Gill at number 4, Rishabh Pant at number 5, Karun Nair at number 6, Jadeja and Shardul Thakur at 7 and 8 respectively. And my three fast bowlers would be Arshdeep, Siraj and Prasidh Krishna. Arshdeep, obviously because we need a good left arm pacer. India hasn't had a very good left arm pacer since Zahir Khan's retirement. So Arshdeep has a big shoe to fill. तो मेरे को लगता है अर्शदीप कर सकता है. एंड he has got that control. He has shown that he can take wickets. लिमिटेड ओवर्स में उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है एंड होपफुली ही कैन कैरी दैट आउट इन इंग्लैंड एज वेल. प्लस इंग्लैंड में उसकी जैसे टाइप की बॉलिंग है, जितना उसको लैटरल मूवमेंट में सपोर्ट मिलेगा. सो आई थिंक सो दिस कैन बी अ रियली गेम a career changing series for him as well. So let's hope he has a very good series. lack of Bumrah's availability यार, ये मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि as said by Ravi Shastri and Virat Kohli in the past, that you cannot win matches abroad until you are picking 20 wickets in a test, right? And we saw how much India is dependent on Bumrah in the last Border Gavaskar Trophy, right? So whenever Rohit wanted wicket, whenever India wanted wicket, Bumrah was put on. And जितना एफर्ट बुमराह ने डाला है, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी, तो कहीं ना कहीं उसको इंजर्ड होना भी था, जो वो लेटर स्टेज में हुए भी. तो यार फर्स्ट टू टेस्ट में उनका एब्सेंस तो बहुत ज़्यादा खलने वाला है ऑब्वियसली. एंड आई एम जस्ट होपिंग कि इंडिया किसी भी तरीके से सही कॉम्बिनेशन सेट कर पाए एंड फर्स्ट टू टेस्ट में बहुत अच्छा फाइट दे एंड इफ़ पॉसिबल प्ले अ ड्रॉ. और अगर
obviously hoping for the win. अगर आप first test जीत के second draw करते हो, then it sets the stage for Bumrah to come and just rattle England out, and hopefully India can win the series this time. But if things go downhill, then I think so. If you're losing the first one, play a draw in the second one, because we need a draw so that when Bumrah comes in, we can actually level the series and go on to win from there. So India needs to get going from the very first ball, and from the very first test they need to be very aggressive. They need to plan things out very minutely for every England batsman, because we have seen their brand of cricket. If you're not picking wickets early on, they can easily score around we have seen them scoring 150 runs in a session, right? So that's a lot in test cricket, and they are very much capable of doing that. So India needs to be aggressive. India needs to plan minutely, and I think they will do it. So let's hope India has a very good series, and my series prediction would be either a 2-2 draw or a 3-1 win for England. So it's not like I don't want India to win the series. I do want India to win the series. I hope India wins the series, but in order to win the series every batsman needs to step up. बुमराह के अलावा भी दूसरे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी विकेट्स लेने होंगे, और एक दो विकेट से काम नहीं चलने वाला. दे नीड टू गेट इंग्लैंड बैट्समैन आउट. 20 विकेट तो चाहिए ही चाहिए, वरना आप इंग्लैंड में तो सीरीज़ नहीं जीत रहे. So let's hope India can win. Coming on to IPL, top 4 is fixed. GT, RCB, PBKS, MI. Top 2 क्या होने वाले हैं? I am an RCB fan, so obviously I would pick RCB and PBKS. And third, I think Gujarat, and fourth MI. So, and my final prediction as well is RCB versus PBKS. Because and primarily because of the brand of cricket that they have played cricket with, so I'm not saying GT hasn't played well or MI hasn't played well, but I've really liked RCB's and PBK's new approach. They have played a lot more courageously. They have planned things very well this time round. Their bowling attack has been potent. Yeah, they were flowing runs at times, but it was potent than previous seasons. तो इस बार तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा है, and I want to see a new champion, hopefully RCB, but let's see. And my final prediction is obviously RCB versus PBKS. Moving on to football, today was last match day of Premier League. It has been an amazing Premier League. बहुत ज़्यादा नेक टू नेक रहा है टॉप फोर के लिए. न्यूकासल वर अनलकी. आज का मैच जीतना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, विच दे क्लियरली फेल्ड टू. लेट्स टॉक अबाउट टॉटनहम. मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही यार. हाउ कैन यू आपने यूरोपा लीग में फाइट करके रिजल्ट निकाल दिया. यू वॉन यूरोपा लीग. आप 17 ईयर्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 17 और 18 ईयर्स बाद आप अपने पहली मेजर ट्रॉफी जीती, और फिर आप प्रीमियर लीग के लास्ट मैच डे में आप जाके 4-1 हार जा रहे हो अगेंस्ट ब्राइटन, एंड आई थिंक सो इट वाज एट देयर होम. सो व्हाट इज़ हैपनिंग मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार. विथ हॉटस्पॉट इट्स टोटली डिफरेंट. टॉकिंग अबाउट मैन यूनाइटेड वर एबल टू grab a 2-0 win after that. कंट्रोवर्शियल तो नहीं था मेरे हिसाब से, तो था रेड कार्ड एमिलियानो मार्टिनेज का. क्लियरली हॉयलैंड को उसने क्लियरली स्टॉप किया था, जिसके बाद अगर हॉयलैंड निकल जाता तो ऑब्वियसली ही कुड हैव इजीली स्कोर्ड अ गोल. सो मैन यूनाइटेड ने सीज़न एक एटलीस्ट विन के साथ ख़त्म किया. रूबेन अमोरिम की स्पीच जो थी हैज़ गिवन, I'm sure that it has given a lot of hope to a lot of Man United managers around the world. And even as a neutral fan, you can clearly say I am a Real Madrid fan, but even as a neutral football watcher you want to do Man United do well. You want to see Man United do well, right? So, because as much as we troll that team, as we troll their players, sometimes Maguire or this or that, but
we all can agree on one thing, that there is no English football without Man United. Man United need to find a way now. हो गया यार, सर एलेक्स फर्गसन को गए अब हो रहे हैं 12 साल हो गए हैं. Now it's high time that United fight back, and मैं चाहूँगा कि यूनाइटेड नेक्स्ट सीजन, if not European, like UCL football, at least top 6 में finish करे. I would like to see United back among the top 6, and then eventually अगर maybe a year after, if they can go on to win, not only win, yeah, let's start with a go on to win, at least basic आप अपने domestic competitions जीतो, FA Cup जीतो, आप Carabao Cup जीतो, ताकि you can get that momentum back and UCL में वापस आएँ at least. So we all want Man United to do well, and hopefully they will. There will be a lot of signings, a lot of player will be sold. Rasmus Højlund का already हम rumor सुन रहे हैं, विक्टर ओसिमन आ रहा है, बहुत सारे players जाएंगे, क्रिश्चियन एरिक्सन का announcement हुआ जैसा हमने सब देखा. So a lot will change, and hopefully let's hope that it changes for good. Congratulations to Liverpool for winning their Premier League, equaling Man United on Premier League records, 20 each. So back at their perch, as any Liverpool fan would say. So congratulations to them. Also congratulations to Arsenal, City and Chelsea for qualifying for UCL football next season. Chelsea ने बहुत Chelsea से actually यार hope कोई कर नहीं रहा था UCL की finish की, but they have done well. Enzo Maresca has done well with the side that he has. जितने ज़्यादा options हैं, so he has done well, and I think so Chelsea, as any other Chelsea fan, would be happy playing European football. So वहाँ पे भी हमको Chelsea front पे भी देखना पड़ेगा कि कितने सारे signings हो रहे हैं, कितने sell हो रहे हैं, because Chelsea are always a very they have been a very aggressive team on market, right? So इस बार मेरे को लगता है उनके तरफ से हमको ज़्यादा सेलिंग दिखने वाली है इंस्टेड ऑफ परचेजिंग. सो लेट्स सी कौन कौन सेल होता है, कौन कौन आता है. इट विल बी एन अमेजिंग 2 months अहेड. टॉकिंग अबाउट क्लब that I love, Real Madrid, Mr. Ancelotti has gone. Hopefully he does well with Brazil, right? Luka Modric, Lucas Vazquez, 2 अनमोल रत्न रियल मैड्रिड के और छोड़ के जा रहे हैं क्लब. लूका मॉड्रिच एंड लूकास वास्केज, दे बोथ हैव डन रियल मैड्रिड अ लॉट प्राउड. दे हैव वॉन वेरियस ट्रॉफीज विद अस, मतलब रियल मैड्रिड की जो रीसेंट हिस्ट्री, एटलीस्ट जो लास्ट डेकेड है, मतलब वो इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज प्लेयर्स लाइक लूका मॉड्रिच, काजिमीरो थे, लूकास वास्केज थे, टोनी क्रूज थे. इन लोग के कारण हमारी लास्ट डेकेड की हिस्ट्री पूरी लिखी गई है. इन्होंने हिस्ट्री बनाई है, एंड ऑब्वियसली इनकी कमी खलेगी. लूका मॉड्रिच की कमी खलेगी, लूकास वास्केज जैसे प्लेयर की कमी खलेगी, जिसने अपने आप को पीछे रख के हमारे जो भी क्लब ने उससे डिमांड किया उसने किया. वी ऑल नो ही स्टार्टेड एज अ विंगर, बट ड्यू टू इंजरी क्राइसिस एट द क्लब ही प्लेड एज अ राइट बैक, गेव हिज ऑल. ऑब्वियसली हर बार उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा. टैक्टिकली भी कई बार एंसेलोटी से मिस्टेक्स हुई, but at the end we have to be grateful, because whatever they have done for this club, वैसा सबको करने का मौका नहीं मिलता है, and we should be grateful for what they did, and we are, as a Real Madrid fan, I am certainly very grateful. Club World Cup is coming. Hopefully Real Madrid can win the Club World Cup, and they can give a proper signing off to Luka Modric and Lucas Vazquez. No, it's only apt that they win it, because जब last year जब क्रूज रिटायर हुए थे, so it was UCL final when we won against Dortmund at Wembley, right? So it will be apt अगर हम क्लब वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, and Luka Modric and Lucas Vazquez are leading the trophy parade and all. So let's hope we do win it. Xavi has been announced as our next manager for upcoming 3 seasons until June 2028. Signings होंगे obviously, बहुत सारे हम rumors सुन रहे हैं, and as rumors turn into reality, I will be here reacting upon it.
informing you guys what I informing you guys, and will be presenting my opinion. So it's just my opinion. We all can feel differently about it. So yeah, Xavi का अपॉइंटमेंट तो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है. We all Real Madrid fans can agree upon this, and we are very excited about it because the kind of football that he plays, the kind of result that he has extracted out of a side like Leverkusen. Leverkusen weren't a bad side, but they were going through a bad phase when he entered them. I think so. They were 16th or 17th in Bundesliga, and then he went on to, I think so. He was actually, I think so, 51 या 54 गेम्स था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे वो एक भी मैच नहीं हारे, उनको एकदम विनिंग स्ट्रीक में लेके गए, बायर्न का डोमिनेंस तोड़ा. सो वी होप दैट काइंड ऑफ फुटबॉल रियल मैड्रिड भी खेले. इस साल तो हम बार्सिलोना से बहुत हारे हैं. नेक्स्ट ईयर यू नेवर नो हाउ इट गोज. So यार वेरी इंपॉर्टेंट UCL फाइनल. यार एज अ रियल मैड्रिड फैन इतना ज़्यादा फेयरवेल चल रहा है. UCL फाइनल के बारे में तो हम भूल ही गए. PSG वर्सेस इंटर, बहुत क्रेजी मैच होने वाला है. आई होप हमको कोई डल मैच ना देखने को मिले, एंड मेरे हिसाब से देखने को नहीं भी मिलेगा, क्योंकि दोनों टीम्स जैसा फुटबॉल खेलती है, बहुत ज़्यादा अटैकिंग है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत फिजिकल रहते हैं. एंड इस बार जिस हिसाब से आर्सेनल बोल रहा हूँ, PSG जिस हिसाब से खेलते आ रही है, सो वी विल सर्टनली सी गोल्स फ्रॉम देम, एंड वी विल सर्टनली सी गोल्स फ्रॉम इंटर एज वेल. अगर सेमीफाइनल जैसा इंटर वर्सेस बारसा जैसा गेम देखने को मिल जाता है तो फिर इट विल बी वन फॉर द एजेस. बट आई थिंक सो आई एम होपिंग फॉर टू मच. सो अगेन आई कीप इट शॉर्ट. आई थिंक सो इंटर इज़ विनिंग दिस ईयर्स UCL. बट अच्छा मैच रहेगा देखने के लिए फ्रॉम ए न्यूट्रल. कभी कभार थोड़ा सा सिट बैक. हम भी रियल मैड्रिड फैन, हर बार हमको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. सो इस बार हम पीछे बैठ के, आराम से बैठ के, घर में बैठ के देखते हैं UCL फाइनल, हु विन्स इट. एंड लेट्स सी. माय प्रेडिक्शन इज इंटर मिलान. That's it from me, guys. Please like, share, subscribe, show your support, and yeah, thank you so much.